ये जो न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, वो सिर्फ गुस्सा करने के लिए नहीं होता कि तुमने गुस्सा किया तो न्यूटन का थर्ड लॉ उसको हम आज ही इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ये एक्चुअल रियल लाइफ में भी काफी जगह काम में आता है, अभी के अभी। I am dealing with the portion that is tide, the portion of the tide. What is the tide? Basically, tide is nothing but the periodic rise and fall of water. So the water rises and falls. That is, there is a vertical movement involved that you will call as the tide. What are the factors which are responsible? The factors which are responsible are A, the gravitational pull of sun and moon. The gravitational pull of sun and moon, that is one. The second is the centrifugal force. The centrifugal force. What is tide? Nothing but the periodic rise and fall of water. What are the factors which are responsible? The gravitational pull of sun and earth, and also the centrifugal force. Let's look at this diagram here. Let's look at the diagram here. See, here is your sun and moon. Here, the sun and moon, you have this gravitational pull. The gravitational pull towards the sun and the moon. To balance this gravitational force, there is a counter force. Okay. So what is the centrifugal force? The centrifugal force is the counter force. ये counter force है. Okay. So one is that there is a tidal bulge. Towards sun and moon. जिस direction में sun और moon है, उस direction में एक tidal bulge है. और because there is a pull, there will be counter pull. You remember Newton's third law? क्या था Newton's third law? To every reaction, there is equal and opposite reaction. If there is a gravitational pull, there will be a counter force also. That counter force you will call as the centrifugal force. So there is one tidal bulge because of the gravitational pull. There is other tidal bulge because of the centrifugal force. And this way you can see the tides. ठीक है, ये जो न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, वो सिर्फ गुस्सा करने के लिए नहीं होता कि तुमने गुस्सा किया तो न्यूटन का थर्ड लॉ हम आज ही इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ये एक्चुअल रियल लाइफ में भी काफी जगह काम में आता है, अभी के अभी। दिस इज एप्लीकेबल ऑल्सो इन दी रियल लाइफ। ठीक है, सो बोथ द ग्रेविटेशनल फोर्स as well as the centrifugal force is responsible for the formation of the tide. ठीक है, so what is tide? What are the factors responsible for the tide? Then I will be dealing with the types of tide. The types of the tide. The first important type is the spring tide. The spring tide. And the other important type is the neap tide. What is spring tide? What is neap tide? ठीक है, so first, what is a spring tide? When if this is your earth, this is the moon, and this is the sun. Okay, so both they are in one line. ठीक है, एक लाइन में है. What do we call this? Do we call this as the full moon or do we call this as new moon? This is what and this is what?
The first one is new moon. Yes, the first one is the new moon. ठीक है? You know how did I remember? How did I remember? This is the sun. तो ये तो sunlit होगा, right? This is the earth. Can you see the moon here? You cannot see the moon here because this is the earth's portion where there is night. यहाँ पे earth के portion में night है, तो यहाँ पे moon दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा. What do you call this? You call this as no moon. No moon, or you call this as the new moon. इसके बाद नया moon आने वाला है, new moon. ठीक है? So this is the new moon. And here if this is the earth, this is the sunlit, and here this is the dark portion. यहाँ पे moon पूरा दिख रहा है आपको, पूरा का पूरा moon दिखेगा. What do you call this as the full moon? ठीक है? This is your full moon. I am just telling you the trick wherein you can remember this. What happens here? Our discussion is about tide. The discussion is about the spring tide. Spring tide, because the sun, moon and earth, the sun, moon and earth, they are in the same direction. There will be strong there will be strong gravitational pull, and obviously there will also be the strong centrifugal pull. So gravitational pull and the centrifugal pull, this will be very strong. What do we call this? You call this as the spring tide. Here also on the earth, there will be strong gravitational pull, there will be strong centrifugal pull, and you will get the spring tide. So spring tide happens when the sun, moon and the earth, they are in same direction. They are in the same line. When they are oriented in the same line, you will get the spring tide. ठीक है? फुल मून दिख रहा है ना, ये देखो अर्थ है, इस तरफ लाइट, इस तरफ नाइट है, इस तरफ लाइट है, ये लाइट वाला पोर्शन है, ये नाइट वाला पोर्शन है, तो पूरा का पूरा मून दिख रहा है ना पंकज. जब पूरा का पूरा मून दिख रहा है आपको, यहाँ खड़े हो जाओ, पूरा मून दिखेगा. दैट यू विल कॉल एज द फुल मून. ठीक है? So here in spring tide, the sun, moon and earth, they are on the same line. And what happens in the neap tide? In the neap tides, the sun, the earth and the moon, they are at the right angle. So in the neap tide, the sun, moon and earth, they are at the right angle. They are at the right angle. If this is the gravitational force and this is the centrifugal force, if this is the centrifugal force and this is the gravitational force, तो इतनी बड़ी tides नहीं आती है. Not major big tides will come in the neap tide. In the neap tide, the forces are countered. When the forces are countered, then you will have the neap tide. The force acted by sun, is counteracted by moon. The sun and the moon, their force will counteract. Okay, and then you will get neap tide. Centrifugal force भी दूसरी तरफ tide को खींचता है. ठीक है? Centrifugal force भी दूसरी तरफ tide को खींचता है. Okay, if this is the earth, this is the moon, यहाँ पे समझो सेंट्री, यहाँ पे ग्रेविटी का फोर्स है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल है, इसको काउंटरएक्ट करेगा ना न्यूटन के थर्ड लॉ से. यहाँ पे आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टाइड क्रिएट करेगा दूसरी जगह पे. यहाँ पे पहली जगह पे ग्रेविटेशनल पुल के कारण है, यहाँ दूसरी जगह पे सेंट्रीफ्यूगल के कारण है. ठीक है? दूसरी जगह पे क्रिएट करेगा. श्वेता, स्प्रिंग टाइड का डायग्राम आई विल एक्सप्लेन. ठीक है? व्हाट इज हैपनिंग इन द स्प्रिंग टाइड? ठीक है? इन द स्प्रिंग टाइड दिस विल अकर व्हेन द अर्थ, द मून एंड द सन, दे आर इन द वन लाइन. therefore ये भी ग्रेविटेशनल पुल कर रहा है, ये भी ग्रेविटेशनल पुल कर रहा है, तो ये यहाँ पे बड़ा ग्रेविटेशनल पुल होगा. अगर बड़ा ग्रेविटेशनल पुल होगा
तो बड़ा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, राइट? Therefore what will you will have high tides. अब या तो फिर ये होता है स्प्रिंग टाइड में, दूसरी पोजीशन क्या होती है स्प्रिंग टाइड में? सन है, अर्थ है, मून है, इसका ग्रेविटेशनल पुल, इसका ग्रेविटेशनल और सेंट्रीफ्यूगल पुल. यहाँ पे क्या है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन प्लस you have the gravitational pull of the sun plus the centrifugal force of the moon. You will have big tide, high tide. Here it is the gravitational pull of the moon and the centrifugal force of the moon, sun. The centrifugal force of the sun. ठीक है? Therefore high tide.